Evening, children of class 4. I'm sorry I'm doing it little late for you all, but in the evening you can sit and study and do your homework. We are going to start with the syllabus, but I'm starting from the back. The last lesson of your syllabus I'm starting first because it is the easiest among all the lessons. So today I'll be doing subject and predicate. I don't want to start with the hard one so that you get boring in the beginning. Okay, we are just starting for the second unit test. So let me start with the easiest lesson. So this is your last lesson of second unit. I'm doing it first. After that I'll continue the lessons. Okay children, thank you. Now see, subject and predicate. What is subject? What is subject? Subject is something we are talking about. Okay, the subject is like we are talking about the cup. Okay, we are talking about the cup. Okay, was on the table. What happened to the cup? Cup, what happened to it? Was on the table. Did you understand? The flight, we are talking about the flight. Okay, about whom we are talking? কার সম্বন্ধে কথা হচ্ছে? কি কথা মানে কার সম্বন্ধে কথা হচ্ছে? That is subject. কি কথা হচ্ছে? That is predicate. Did you understand? So किसके बारे में बात हो रहा है वो है सब्जेक्ट, और क्या बात हो रहा है वो है प्रेडिकेट. हमको डिवाइड करके लिखना है. जैसे कि सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में, किस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं. द कप, क्या है कप के बारे में? वॉज ऑन द टेबल. कप, कप का क्या हुआ? टेबल के ऊपर था. আমরা কথা বলছি কাপের সম্বন্ধে. কাপ কি, কাপের সম্বন্ধে কি বলছি? টেবিলের উপরে কাপ রাখা আছে. ওকে. দ্য ফ্লাইট, ফ্লাইট মানে by plane you go, by aeroplane. The flight, like you say the train. So we are saying flight. Flight means flying in the sky. Okay, by aeroplane. The flight was delayed. What happened to the flight? Flight एक ही होचे was delayed because of the fog. Fog माने धुंध जो होता है. Fog जे शीतकाले fog होए ना, what to say, I don't know, I've forgotten in Bengali anyway. শীতকালে ফগ মানে আমরা কিছু দেখতে পারি না, এরকম ঠান্ডা যখন পড়ে আর তো চারদিকে কুয়াশা. ইয়েস, কুয়াশা যেটা. ওকে. দ্য গার্ল ওয়েরিং দ্য ব্লু হ্যাট. नाउ वी हैव टू राइट, वी कांट राइट द गर्ल. गर्ल्स के साथ वेयरिंग अ ब्लू हैट भी जुड़ा हुआ है. उसका डिस्क्राइबिंग है पूरा. किसके बारे में बात हो रहा है? जो लड़की नीला हैट पहनी हुई है. द गर्ल हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू हैट, वी आर टॉकिंग अबाउट हर. सो शी बिकम्स अ सब्जेक्ट ऑन द होल. गर्ल के साथ वेयरिंग अ ब्लू हैट जुड़ा हुआ है. विदाउट दिस उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल रहा है. वी डू नॉट हैव हर आइडेंटिफिकेशन. द गर्ल में নীল টুপি পরার মেয়ে. নীল টুপি পরার মেয়ে তার মানে গার্লর সঙ্গে এটা জড়িয়ে আছে. ইজ মাই সিস্টার. আমি নীল টুপি না বললে তুমি খুঁজতে থাকবে কোথায় কোথায় কোথায়. তো তার জন্যে সাবজেক্টটা কি, নীল টুপি যে পরে আছে ওই মেয়ের সম্বন্ধে কথা হচ্ছে. जो नीला टोपी पहनी है उसी लड़की के बारे में बात हो रहा है. क्या बात हो रहा है? प्रेडिकेट क्या है? इज़ माई सिस्टर. ठीक है. नाउ विल कम बैक टू द लेसन. In these sentences, the words in bold are the subjects and the underlined words are the predicate. ये जो है, जो bold मतलब जो लाल में लिखा हुआ है, लाले जेटा लिखा है, that is the subject, and the rest one underline is a predicate. The subject is the noun part of the sentence. See, this is the noun. Cup is a noun, flight is a noun, girl is a noun. Noun part of the subject. It tells us what or whom the sentences is about. It tells us about what about the sentence. I mean about the noun. Noun के बारे में क्या, that is predicate. Okay, the noun part is the subject. Now, Mani is preparing for the exam. So money here, money is a subject because money is a noun here. Okay, the noun part is the subject. Is preparing, what is money doing? Money ki korche is preparing for the exam. That is your predicate. Some rare old boys, some rare old bosses
This is all one in one because it is explaining about the was সম্বন্ধে বলছে rare पावा जाए ना मतलब लाखों में एक है rare है मिलता नहीं है ऐसा ओल्ड वॉजेस कैन बी सीन इन द म्यूज़ियम में ही दिखाते हैं ये ओल्ड वॉजेस कैसा वॉज के बारे में एक्सप्लेनेशन है इसीलिए वो सब्जेक्ट में आ जाता है आई नाउन यहीं पे ख़त्म यहाँ पे वॉजेस जब तक नाउन नहीं आ रहा है तब तक पूरा लिखना पड़ेगा एन्जॉयड द मैच आई सब्जेक्ट क्या करे आई enjoyed the match. Okay, the predicate is the part of the sentence which tells us what the subject or does. The predicate can be one word or a group of words. Okay, what the subject or does. The predicate can be one word or it can be group of words also. Predicate it can be one word also. ठीक है. Now the children play. The children play. See, it is one word. Predicate is play. Who is the subject? The children. Which is the subject? Children. Play is a predicate. Millie. See, one word. And the predicate is was watching the cartoon. See, it can be one word, it can be many. Commands also have the subject and the predicate. Now, commands is having all the command means keep quiet, or the baby will wake up. Please complete your work. All these are commands. That means you're giving the command. Sashon jeta korcho, that one. We assume the subject is you. You keep quiet or the baby will wake up. Keep quiet or the baby. You we don't mention. Okay, you keep quiet or the baby will wake up. Amna sob shomoy use kori na. Keep quiet or the baby will wake up. Eta use kore. Okay. You please complete your work. Now we are not going to use you. Because always when we use you, the sentence doesn't sound good. So when we are doing the command, we don't use you. Please complete your work. নিজে কাজটা শেষ করো তুমি নিজে কাজটা শেষ করো এরকম আমরা বলি না নিজে বলি প্লিজ তোমার কাজটা শেষ করো যখন আমরা অন্য লোকের সঙ্গে বলছি তো ওকে ইউ বলে আমরা সব সময় ডাকি না Did you understand? তোমার মা তোমার সঙ্গে যখন কথা বলছে তুমি এই কাজটা তাড়াতাড়ি করে নাও এইরকম বলে না বলে কাজটা তাড়াতাড়ি করে নাও কেন উনি দেখছেন তোমার দিকে আর বলে দিচ্ছে Did you understand? You don't walk on the middle of the road. Don't walk on the middle of the road. Did you understand? Now among many other then we point out and say you. Did you understand children? Let me come back with the lesson.